Hello everyone. Today we are going to learn how to solve loss and profit questions in a very easy way. So let's start. The first question, a shopkeeper buys a book for rupees 200 and sells it for rupees 250. Find the profit and profit percentage. First understand the cost price. Here cost price is rupees 200. Cost price means buying price. Next, selling price. Here in this question, selling price is rupees 250. So step 1, we need to find profit. And what is the formula of taking out profit? That is selling price minus cost price. So 250 minus 200, that is rupees 50. So here the shopkeeper has a profit of rupees 50. Now second step, we need to find profit percentage. Now what is the formula of profit percentage? That is SP minus CP, which is profit by CP multiplied by 100. Profit we have already taken out, that is rupees 50 by 200 multiplied by 100. So the here answer is 25%. So the shopkeeper earns rupees 50 profit, which is equals to 25% profit. Now moving on to the next question. A pen is bought for rupees 50 and sold for rupees 40. अब हमने 50 में पेन खरीदा और 40 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? That is loss. So here cost price is rupees 50 and selling price is rupees 40. Now formula for taking out loss is CP minus SP. That is कितना हो जाएगा? 50 minus 40, that is rupees 10. Now move to the loss percentage. So the loss percentage formula is CP minus SP by CP multiplied by 100. So when we put the values, we will get the loss percentage, that is 20%. So the shopkeeper has a loss of rupees 10, which is 20% loss. Moving on to the third question. Here cost price of a toy is rupees 300 and it is sold at a profit of rupees 60. Find the selling price. Since profit is given in rupees, we simply add it to cost price. यहाँ पर हमने एक टॉय 300 रुपीज़ में ख़रीदा और जब उसको बेचा तब हमें 60 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। और हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमने जितने में ख़रीदा था प्लस जितना हमें प्रॉफिट हुआ, उन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द सेलिंग प्राइस. सो हेयर रुपीज़ 300 प्लस रुपीज़ 60 वी विल ऐड, वी विल गेट 360 रुपीज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैग इज़ रुपीज़ 500. अब जितने में हमने बेचा बैग वो रुपीज़ 500 दिया हुआ है. लॉस इज़ रुपीज़ 100. अब हमने उसमें 100 रुपीज़ का क्या किया? लॉस किया. और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या था बैग का. इट मीन्स लॉस मीन्स वी सोल्ड द आइटम एट अ लोअर प्राइस. सो CP मस्ट बी मोर. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टू कैलकुलेट CP वी विल ऐड selling price plus loss, that is rupees 500 plus 100, which is equals to 600 rupees. So actual price, that is cost price of the bag, was 600 rupees. Moving on to the question number 5. Here a man buys a chair for rupees 800. एक आदमी ने एक चेयर खरीदी 800 रुपीज़ में और जब उसको बेचा तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ. अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसने कितने प्राइस में बेची चेयर. Now one important point, since profit is given in percentage, we will use this formula and calculate it. So selling price will be rupees 880. बाकी के questions हम next video में solve करेंगे. So stay tuned. Thank you.